In this video, we'll discuss the background of the poem, The Second Coming, written by Irish poet W.B. Yeats. Here are some important points to remember from exam point of view. The Second Coming is a poem written by W.B. Yeats. This is the first thing that we need to remember. This poem was first written in 1919. We here need to remember three dates for the Second Coming. First is 1919, second is 1920, and the third is 1921. 1919. In 1919, this poem was written. It was first published in 1920 in the Dial, and later in 1921 in the verse collection, poetry collection of W.B. Yeats, the name of which is Michael Robertus and the Dancer. This poem was published. So we have to remember two dates, especially from here. 1919 poem was written. 1920 it got published first. First in the Dial. 1921 it got published in Michael Robertus and the Dancer. So these are the facts. The poem uses Christian imagery regarding two things we have to remember here. First is the apocalypse, and the second is Second Coming. Since the Second Coming is a religious concept, and allegorically it also described the atmosphere of post-war Europe, post-First World War of Europe. So another thing that we will discuss in depth about the apocalypse and the Second Coming. Here, few things to remember here is that it is considered one of the major work of the modernist poetry, and it has been reprinted in several collections, including one major collection is the Norton Anthology of Modern Poetry. Now let's discuss apocalypse and the Second Coming. So first let's discuss Second Coming. What is Second Coming? Second Coming Second Coming is also called Second Advent or Parousia. So according to the Jewish belief and Islamic belief and Christian belief, it is believed that Jesus Christ will reappear on the earth after the almost 2000 years of its ascension to heaven. कि जीसस क्राइस्ट जो है वो जब हेवन चले गए तो उसके लगभग 2000 साल के बाद वो जो है वापस उनका रीबर्थ होगा on the earth. So this idea is based on the messianic prophecies and the Christian eschatologies. Eschatologies means a part of theology that is concerned with death, judgment, and the final destination of the soul and the humankind. That means in afterlife. तो messianic prophecy और Christian eschatologies के हिसाब से जीसस क्राइस्ट जो है वापस से 2000 साल के बाद इनके जो when he died and ascended to the heaven, तो उसके 2000 साल के बाद he'll take the birth once again on the earth, और इसी को हम लोग कहते हैं Second Coming, Second Advent or Parousia. So this concept, this is the title, the Second Coming. So the Second Coming refers to the expectation that the 2000 years of the death of the Jesus Christ has taken place. So now he must resurrect on the earth on the form of a human being for the salvation of the human being. अब ये जो view है about the Christ Second Coming means different among the Christian denominations and among the individual Christian as well as among the Muslim and the Bahas. So now let's read it. First, the question that may be asked, that Second Coming, this title Second Coming comes from, so this title Second Coming has its root in religion. What is the belief? The belief is that the Christ will be born once again after the 2000 years of its ascension to heaven. And the Second Coming is also called Second Advent, and it's also called Parousia. So now let's read this once. According to religion, the Second Coming, or that is also referred to Second Advent or Parousia, is a Christian and Islamic and Jewish belief that Christian and Islamic belief that Jesus will return again after his ascension to heaven about 2000 years ago. तो 2000 साल के बाद वो वापस आएंगे. तो 2000 साल तो क्राइस्ट के पैदा हुए हो चुके हैं. The idea is based on the messianic prophecies and as a part of most Christian eschatologies. This view about the Jesus Christ Second Coming very different among the Christian denomination and among individual Christian, as well as among the Muslim and the people of Bahas
faith. So this is the second coming. The root is religion. This is an important question that may be asked, that from where this term comes, the second coming. So it has its root in religion. Now the second thing that the poem has, it's apocalypse. So the literal meaning of apocalypse is revelation or disclosure. सो वी बिलीव इन एवरी कल्चर, हर कल्चर में हम लोग मानते हैं कि सुपर नेचुरल बीइंग्स जो होते हैं वो अपने आप को वो कॉस्मिक जो मिस्ट्रीज़ है वो रिवील करते हैं ह्यूमन बीइंग को अलग अलग तरीके से, ड्रीम के थ्रू, विज़न के थ्रू, हेवनली जर्नी के थ्रू, सिम्बल्स के थ्रू. जैसे अगर हम इसको बहुत नॉर्मल में मानना चाहें तो हम ऐसे बोलते हैं कि जब हाथ में खुजली हो रही तो बोलते हैं कि अभी पैसे आने वाले हैं, तो या फिर आँख फड़क रही होती है तो उसका हम कुछ मीनिंग निकालते हैं. तो एपोक्लिप्स क्या है? एज अ काइंड ऑफ रिविलेशन और डिस्क्लोजर. तो यहाँ पर हम जब सेकंड स्टैंजा ऑफ पोएम में जाएंगे तो विल सी नंबर ऑफ इमेजेस दैट आर एपोक्लिप्टिक इमेजेस, जो कि डिस्क्लोज कर रहा है दैट symbolizes that the Christ is going to be born again because the 2000 year has passed. So apocalypse is a literary genre in which a supernatural being reveals, वो reveal करता है cosmic mysteries, cosmic means the mystery of universe, or the future to human intermediary. The means of mediation means क्या हो सकते हैं? Dreams, visions, heavenly journeys, and they typically features symbolic imagery that are drawn from Hebrew Bible, cosmological and pessimistic history surveys, and the division of time into periods, esoteric numerology, claims of ecstasy and inspiration. There may be number of things. So this apocalypse revelations are typically meditated through such means as dreams and visions. And we know that in the ancient world, dream and vision were not, and this world was not, there was a connection between it. It was not taken or considered separately. Through the dreams, visions, angels, heavenly journeys, etc. They serve to connect the two set of axes. So according to the European belief or the Brahmic belief, there are two axes. The spatial axis which has God and the heavenly realm above का पार्ट, ऊपर का पार्ट, हेवन का पार्ट, जिसको स्पेशल एक्सेस बोलेंगे, जिसमें गॉड रहते हैं और पूरा हेवन का रिल्म रहता है, और ह्यूमन वर्ल्ड जो नीचे रहता है, एंड द टेम्पोरल एक्सेस ऑफ प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. अब रिविलेशन जो है दस डेमोन्स्ट्रेट दैट गॉड रूल्स द विजिबल वर्ल्ड. तो ये रिविलेशन जो है, जो दिखा रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या होने वाला है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गॉड जो है, जो किस एक्सिस में है, स्पेशल एक्सिस में है, वो विजिबल वर्ल्ड को रूल करते हैं, एंड दैट द प्रेजेंट डेज आर लीडिंग इनटू एन एंड टाइम इन विच डिवाइन जस्टिस विल बी डन. कि प्रेजेंट टाइम जो है वो एंड टाइम में जा रहा है, जहाँ पे डिवाइन जस्टिस होगा सबके साथ, एंड गॉड्स रूल विल बिकम विजिबल. और गॉड का रूल जो है वो विजिबल और हो जाएगा और लोग इसको समझ पाएंगे. तो एपोक्लिप्स क्या हो गया? तो आप अगर एकदम शॉर्ट में याद रखना चाहते हो तो बाकी आप कुछ मत याद रखिए, आप दो चीज़ याद रखिए. फर्स्ट, सेकेंड कमिंग, इसका मतलब द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट. रूट क्या है? रिलीजन. और एपोक्लिप्स मीन्स रिविलेशन और डिस्क्लोजर. किसके थ्रू? ड्रीम्स, विजन, हेवनली जर्नीज और सिंबॉलिक इमेजरी के थ्रू. बस इतना ही. नाउ लेट्स कम नेक्स्ट. Here are 3-4 questions that are usually asked in the competitive examination, क्योंकि second coming term ही जो है बहुत important है. तो इस second coming poem से बहुत सारे phrases लिए गए हैं जो अलग अलग book के टाइटल में आते हैं, और दिस क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड. तो इस पोएम में हम लोग एक फ्रेज पढ़ते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट. तो थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ नॉवेल बाय शिनवा अचीबी. कलेक्शन ऑफ ऐसे है स्लाउचिंग टूवर्ड्स बैथलहम एंड द सेंटर विल नॉट होल्ड. ये नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री भी है. इट इज़ रिटन बाय जॉन डेडियन. थर्ड, द सेकेंड कमिंग इज अ नॉवेल written by Walker Percy. Or widening gyre, you see the widening gyre, these all are the phrases. Things fall apart and slouching towards Bethlehem and the center will not hold, the second coming. The widening gyre is by Robert B. Parker. तो ये 4-5 चीज़ें आपको याद रख लेनी. It may be asked. और सबसे important is this one, that things fall, from where the title of Things Fall Apart has been taken. So Things Fall Apart is written by Chinua Achebe and its title has been taken from the poem
by W.B. Yeats, the title of which is The Second Coming. The Second Coming itself is the title of the novel by Walker Percy. In the poem, there is a concept of gyre. जायर का कॉन्सेप्ट W.B. Yeats ने अपने कलेक्शन द विजन से में एक्सपेंड किया है. और द वाइडनिंग जायर इज़ अ नॉवल रिटन बाय रॉबर्ट बी पार्कर. इसके अलावा ऐसे कलेक्शन है स्लाउचिंग टुवर्ड्स बेथलहम, ये जॉन डिडियन ने लिखा है. और द सेंटर विल नॉट होल्ड, ये एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है, वो भी जॉन डिडियन की है. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन द बैकग्राउंड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द टेक्सचुअल स्टडी ऑफ द पोएम. थैंक यू.